Hello, dear students or friends. Welcome back to my channel Rahul English Study. फ्रेंड्स, नेक्स्ट 30 पर आज डिस्कस करेंगे जो कि मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये टीजीटी, पीजीटी एंड अदर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो समय को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। His poetry, question number first, his poetry acts like an incantation. उनकी कविता एक मंत्र की तरह काम करती है। Change the sentence, change the structure of the sentence, substitute one synonym for another, and the whole effect is destroyed. The spell loses its power. Who said? ये किसने कहा था? आंसर करेंगे तो आंसर इज, किसने कहा था? ये आंसर करेंगे। इसका क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा मैकाले। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, शेक्सपियर्स पोइट्री इज characterless. Shakespeare's poetry is characterless is that it does not select the individual Shakespeare, but John Milton himself is an every line of the Paradise Lost. Indeed, in every one of his poems, it is Milton himself whom you see. His Satan, his Adam, his Raphael, almost his Eve are all John Milton, and it is a sense of his instance egotism that gives me the greatest pleasure in reading Milton's work. The egotism of such a man is a revelation of spirit. Whose comment is this? ये कमेंट किसका है? आंसर करेंगे तो दिस कमेंट इज दिस कॉलेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन्स अपीयर इन द फिगर ऑफ. In Samsung agonist, Milton appears in the figure of. What will be answer? What will be answer? क्या होगा आंसर? आंसर will be Samson. Option C is correct. Question number 4. O dark amid the blaze of noon, irrecoverable dark, total eclipse without all hope of day. Where do these lines appear? ये लाइनें कहाँ दिखाई पड़ती हैं? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रेगन, किसमें दिखाई? आंसर करना है सैमसन एगोनिस्ट. व्हाट विल बी आंसर? Answer will be Samsung agonist. Option C is correct. Question number 5. All otherwise to me my thoughts portend. Where do these lines appear? आंसर करेंगे. What will be answer? क्या होगा आंसर? Answer will be Samson agonist. Option C is correct. Question number 6. Virtue could see to do what virtue would
by her one radiant light though sun and moon, where in the flat sea sunk. Who said? Where in the flat sea sunk. What will be answer? Who said? Who said? आंसर करेंगे इसका, क्या होगा आंसर? द आंसर विल बी मिल्टन इन कॉमर्स. मिल्टन इन कॉमर्स. ऑप्शन सी इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. mortals that would follow me love virtue. She alone is free. She can teach how to climb higher than the sphery chime. Or if virtue feeble were, heaven itself would stoop to her. What will be answer? आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? आंसर विल बी Who said? Who said? Who said? What will be answer? Who said? What will be answer? Answer will be Milton. Answer will be Milton in commerce. Question number 8. Question number 8. Question number 8. But evil on itself shall back recoil, and mix no more with goodness. Who said? What will be answer? Answer will be Milton in commerce. Option C is correct. Question number 9. Question number 9. Milton's Puritanism is reveled in the thundering condemnation of St. Peter against the corrupt clergymen of his times. Their reference is in. What will be answer? Answer will be Lycidas. Answer will be Lycidas. Option B is correct. Question number 10. Question number 10. Blind Thamrish and blind Meonids and Tiresias and Phineas prophets old. Who said? आंसर करेंगे इसका. The answer will be Milton. Option A correct. Question number 11. Question number 11. Tears since as angels weep, burst forth at least. Who said? किसने कहा था? आंसर करेंगे. Who said? Milton. Said by Milton. Option C is correct. Question number 12. Whose style is called grand style? Whose style is called grand style? What will be answer? Easy question. Milton.
Option A is correct. Question number 13. The style of Milton is the natural. The style of Milton is the natural expression of soul exquisitely nourished upon the best thought and finest words of all ages. Whose comment is this? Answer this question. Reply this question. आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? आंसर विल बी petition. Option B is correct. Question number 14. Question number 14. In the sure and flawless perfection of his rhythm and diction, he is as admirable as Virgil or Dante, and in this respect he is unique amongst us. Whose comment is this? Whose comment is this? This comment is, what will be answer? आंसर करेंगे तो this comment is मैथ्यू अर्नोल्ड अबाउट मिल्टन. मिल्टन के विषय में ये कमेंट है. मैथ्यू अर्नोल्ड की ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड काम ऑफ माइंड all passion spent is a very popular line from. ये किससे, ये पॉपुलर लाइन किससे अपीयर हुई हैं? तो मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16. Nothing is here for tears. Nothing is here for tears. Nothing to wail or knock the breast. No weakness, no contempt, dispraise or blame. Nothing but well and fair. And what may quiet us in a death so noble. Who is the author of these lines? What will be answer? What will be answer? What will be answer? आंसर करेंगे. आंसर will be Milton. Option A is correct. Question number 17. O unexampled love. Love nowhere to be found less than divine. Who is the author of these lines? What will be answer? What will be answer? आंसर करेंगे. आंसर will be option. Answer will be Milton in Paradise Lost. Third. Option C is correct. Question number 18. Question number 18. Hail, Son of the Most High, there of both worlds, queller of Satan, on thy glorious work now enter
and begin to save mankind. Where do these lines appear? ये लाइंस कहाँ से appear हुई हैं? What will be answer? मिल्टन का कौन सा मार्क कहाँ से appear हुई हैं? तो answer will be, what will be answer? Answer will be Milton's Paradise Lost Regained. Option B is correct. Question number 19. Question number 19. Which epic of Milton is the product of the Reformation and the Renaissance? What will be answer? The answer will be, what will be answer? The answer will be Paradise Lost. Option A is correct. Question number 20. In Paradise Lost, Milton seems to be companioning the cause of. What will be answer? पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन किन कारणों की पैरवी कर रहे हैं? आंसर करेंगे इंडिविजुअलिज्म. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. ब्यूटी स्टैंड्स in the admiration only of weak minds, lead capture, cease to admire, and all her plums fall flat, that and shrink into a trivial joy. Where do these lines appear? What will be answer? What will be answer? Answer will be paradise. Answer will be Paradise Regained. Option B is correct. Question number 22. To know and knowing worship God, right, is at more kingly. This attracts the soul, governs the inner man, the noble part that other over the body only. Where do these lines appear? ये lines कहाँ से appear होती हैं? आंसर करेंगे. आंसर, what will be answer? Answer will be Paradise Regained. Option A is correct. Question number 23. Question number 23. Samson agonist is said to be classical in form, but in its theme, outlook, and temperament, it is. What will be answer? Answer will be Havric. Option A is correct. Question number 24. Question number 24. Virtue may be assailed but never hurt, surprised by unjust force but not enthralled. Where do these lines appears? ये लाइंस
कहाँ से अपीयर हो रही हैं, अपीयर हुई हैं, क्या होगा इसका आंसर? आंसर विल बी कॉमस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, virtue could see do not what virtue would buy her one radiant light, though the sun and moon were in the flat sea sunk. Where do these lines appears? Where do these lines appears? What will be answer? Answer will be Paradise Lost. Option A is correct. Question number 26. But evil on itself shall back recoil and mix no more with goodness. Where do these lines appear? What will be answer? क्या होगा आंसर? क्या आंसर करेंगे? इट मीन्स बुराई पीछे से हट जाएगी और भलाई के साथ फिर ना मिलना। ये लाइनें कहाँ से अपीयर हो रही हैं? आंसर करेंगे तो आंसर विल बी आंसर विल बी कॉमर्स। यस, ओके, करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27. If virtue feeble were, heaven itself would stoop to her. Where do these lines appear? ये अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। What will be answer? What will be answer? 27 का आंसर करेंगे। अगर पुण्य कमजोर थे तो स्वर्ग उसके पास झुक जाएगा। What will be answer? Answer will be कॉमर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28. Which doctrine is found in Paradise Lost? Which doctrine is found in Paradise Lost? What will be answer? पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा सिद्धांत पाया जाता है? तो ये यानी क्या है? फ्रीडम ऑफ विल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ए पैराडाइज लॉस्ट 29. ए पैराडाइज विद इन दी हैप्पियर फॉर is of. What will be answer? A paradise within thee, तुम्हारे भीतर एक स्वर्ग अधिक सुखी, happier far is of. What will be answer? Answer will be Sally. Question number मिल्टन। इज ऑफ मिल्टन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये मिस्टेक हो गया था जल्दी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 30. Milton left a high road behind him, along which many a tuneful tuneful pauper has since limped
but before him he found nothing but the jungle and false fires. Whose comment is this? क्या होगा आंसर? आंसर विल बी रिले. ऑप्शन ए इज करेक्ट. फ्रेंड्स, ये 30. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन और है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लव वर्ट्यू. सी एलोन इज फ्री. सी कैन टीच how to climb higher than the fairy chime, or if virtue feeble were, heaven itself would stoop to her. Where do these lines appears? आंसर करेंगे. आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कॉमर्स होगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. फ्रेंड्स, ये पिछला क्वेश्चन यहाँ कुछ पिछली वीडियो में या वहाँ कॉस्मस लिखा हुआ था जो कि मिसप्रिंट है हो गया था उसमें, और उसको देख के मैंने यहाँ करेक्ट किया है. तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन है. नेक्स्ट अगले बार और 30 लाएंगे और इस तरह से आपका ये जॉन मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे. फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. फ्रेंड्स, सपोर्ट मी. फ्रेंड्स, अधिक से अधिक सपोर्ट करें. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.